हेलो स्टूडेंट, आई एम स्निग्धा मैम। हम फिर हाजिर हो गए आज तुम्हारे पास, तुम्हारा फेवरेट चैनल ज्ञान घर ट्यूटोरियल हमको लेकर। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में। तुम सब लोग तो जानते हैं लाइट क्या है। व्हाट इज़ लाइट? लाइट इज़ द form of energy which causes the sensation of sight and make things visible to us. ओके, लाइट होते हैं ऐसे एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी जो कोई चीज़ के ऊपर पड़ती तब वही चीज़ हमको विजिबल होती। लाइट नहीं होती तो हम कुछ नहीं दिखाई सकती। ओके, वी कैन नॉट सी एनीथिंग विदाउट लाइट। ओके, नाउ the source of light. To be able to see anything, we need a source of light. Any object which gives us light is called the source of light, such as sun, star, candle, bulb, etc. are the source of light. There are two types of source of light: natural source of light and the artificial source of light. The sun is the natural source of light and energy. Source of light. Two types of source of light: natural source of light and the artificial source of light. Natural source of light: sun, star, etc. And artificial source of light: bulb, lamp, etc. Now we discuss about object. Object has two types: luminous object and non-luminous object. Luminous object and non-luminous object. Okay, so what is the luminous object? All objects that emit their own light are called luminous object. Example: sun. That means जो ऑब्जेक्ट खुद ही अपना लाइट अपना बॉडी से तैयार करती है उसको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे सन। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जिसमें कोई अपना कोई लाइट नहीं है, उसके ऊपर लाइट आने के वो चीज़ को हम दिखा सकते हैं, विजिबल होते हैं, इसको बोलते हैं नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैज थ्री टाइप्स: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. See here the three types of object. This is the transparent object, this is the translucent object, and this is the opaque object. Okay, so transparent object. What is the transparent object? A medium or an object which allow light to pass through it completely is called the transparent object. Okay, so we put this transparent object in front of the torch, but we see cannot any shadow. So this is the transparent object because the पूरा लाइट इधर से उधर पास होती है. This is the transparent object. Okay, now this is the translucent object. We see here, you see
this translate we put here in front of the torch. You see the आधा लाइट जाती है और आधा एब्जॉर्ब होती है, आधा जाती है, पूरा लाइट नहीं जाती है इधर से. So this is the translate, and we put the, this is called the opaque object. We put here, you see the dark shadow. Okay, so this is the opaque object. So you know 3 types of object. This is the opaque object, this is the translate object, and this is the transparent object. Okay, thank you. Now discuss the rectilinear propagation of light. We know light always travel in a straight line in a medium. This property of light travel in a straight line is called the rectilinear propagation of light. The path traverses light in a medium between any 2 points in a shortest. Okay, now we take the practical, that the rectilinear propagation of light. Okay, we take a long straw. Okay, and here you see this is the torch. We put the straw and the torch. You see okay, you see the light can pass. We know the light always pass in the straight line, so we put the straw on the torch and the light passes. But when we bend the straw, but light cannot pass it. Okay, again, okay, again we state, बेंड को जब आप खुल दिया है, देखो जब स्ट्रेट किया है फिर लाइट जा सकते हैं, बट जब ये स्ट्रॉ को हम बेंड कर देती तब लाइट जाना के लिए बंद हो जाती है. तो इसलिए हम जानती है जे लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन. ओके, दिस इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट.